Good afternoon, everyone. On behalf of Women Members Excellence Committee of ICF, it is my pleasure to welcome you all to Yashaswini and Idol. Yashaswini and Idol is a Wednesday series of programs conducted by WMEC for the women members and by the CA women members. This series is an extension of Sky High Symposium which concluded its 100 episodes. It is one of the committee's initiative to not only disseminate information to women members on technical updation and non-technical skills, but also to empower and inspire women members to come at forefront and realize their verbal skills at public forums. Now, I would like to introduce our first speaker today, C. Tanushree Goyal ji. C. Tanushree Goyal, ma'am, is a tax partner in a firm based in Mumbai with 18 years of expertise in US and India tax. She specializes in tax compliance, planning, and strategy for individuals and entities, including multi state returns, drawing on her extensive experience in both US federal and state taxation. Now, I would like Tanushree, ma'am, to please take over. Thank you, ma'am. Please take over. Yeah, hi, Dimple. Thank you so much, and hello, everyone. So today I would be going over the process of U.S. tax preparation, while I will cover some portion of 2025 Union budget, which was recently shared by our Honorable Finance Minister. So we will be going over that. If you have any questions, please feel free to post it on chat below, and then we can definitely answer it. So to start with, I would go around like how these changes have brought in the taxes for the budget. So I will majorly cover the direct taxes changes and suggestions and all the news which is around the tax change because of the budget and how it helps us in day to day and tax planning for our clients. So majorly one of the exemption limit for senior citizen for FD TDS deduction or exemption is like after a senior citizen earns interest on fixed deposit above 50,000 to 100,000, there will be no TDS. So after TDS will be after 100,000. Then the contributions under NPS Vatsalyak scheme are now eligible for deduction under 80 CCD. So this is an additional deduction which we will be getting. Then TDS on rent. So now if you have rent income of 6 lakhs or above, then only TDS will be deducted by people who will deduct TDS. Like if you rent it out to any business and your rental income from that business, annual rental income is 550,000 rupees, then you will not have any TDS. It will only be above 600,000. Then we will have no notional rent for self-occupied property, which is more than one. Like your primary home where you are living, that is not does not have notional rent so far. But if you had a second home which you were using it for vacation purpose, or you had it just for investment purposes, but it was neither rented out, neither you were using it for your personal, you were not using it for, like, it's just vacant, it's not rented and it's just vacant, and you were using it as vacation home, then also there will be no notional rent on that property. So that, what does it imply? That if there is no notional rent, so you can whatever rental, or you can whatever interest you're paying on that property, you can claim that. So does anybody have any questions on that so far? Okay, so let's continue. Okay, and another major thing which came into picture, like if you are earning up to 12 lakh 75,000 under new regime, there will be no taxes paid. So whatever taxes, even though that there is a tax slab rate, that tax slab rate says that up to 4 lakhs you will have no taxes,
But under new regime, we are saying 12.7, 12 lakh 75,000, you will pay no taxes. So if we see it, the reason is under new regime, and we will get tax rebate up to 12 lakh of income. So 12 lakh, your gross income is 12 lakh 75,000. Under new regime, your standard deduction is 75,000, and whatever 12 lakh is left, whatever taxes is there, which is around 60,000, that is completely exempted. So it's not that it is not taxable, it will be taxable, but the rebate on that would be exempted. That will be rebate on the taxes. That is, the tax on that income is exempted. Another thing which is considering here is that your capital gains will not be considered part of 12 lakh 75,000. It will be because the gains are taxed on special rates. That is why 12 lakh 75,000 is for 12 lakh minus 75,000 standard deduction. So 12 lakhs, which is taxed at slab rate, that will have exemption, or you can say the tax on that will be rebate. Now, another thing which is very remarkable, I would say, that we will also get 4 years. Earlier, it was just 2 years, but now for filing updated return, or the return which was not filed, so we have time till 4 years after the 139 one deadline and 100 extended deadline. So we have time to file till 4 years. So these are the major hello. Yes, ma'am, you're saying something. Yeah, these are the major observations and takeaway for direct taxation on with the change in the budget. And this changes are applicable from 2025, that is April 1st 2025, until 31st March 2026. So that is assessment year 26-27. So whatever planning or whatever tax planning we need to do from next year, these changes will help us do the same. So any questions so far if we have, and if anybody wants to understand? Hi, Tanushree ma'am. So, we have a Yeah. couple of questions lined up, but I would rather say maybe we could just keep the Q&A at the end of the session. Okay, no problem. No Yeah, problem at work. all. Okay. Yeah, but once I complete, what I recommend, once I complete tax union budget, we can Sure. then go, because once I switch the topic, it would be better we take. So Makes maybe sense. after Makes 10 sense. minutes, we can have the sessions for Sure. Sure. question Q&A. Okay, Sure. and I'm sorry, I see some technical problem with my camera. It just got switched Okay. off. Okay, I'm sorry. So let me share, 1 minute. Let me share the rebate. 1 minute. Yes. Okay. So this was the rebate. We will get 60,000 tax rebate. So up to 12 lakhs, this will be the 60,000 rebates which we will be getting, that it is not taxable. Hence, we are saying that up to 12 lakh minus 12 lakh 75,000 minus standard deduction, we can take the option of non taxability, or up to 12 lakh 75,000 because of the rebate. Now, after this,
take over some another changes I would like to discuss, which are not extended or which is not directly related to direct tax, but we can have those as other budget changes which may affect day to day life. So we will be having new income tax bill which will be introduced, and as per that all the interpretation will be made, and which was in pipeline from quite some time. So that would be rolled out, and accordingly the sections and all the changes would be made. Another thing is that footwear and other day to day stuff have become a little expensive. Just correct me, because what I understood, these things have become little expensive. So that and we are trying to boost our industry on these industries. We need to boost these industries, our industries in this area. Then leather sector to create all, so that we are boosting, so that there is major employment which is increased, we can increase the exports, so which will benefit in our GDP. Then national centers have been set up for partnerships and expansion. Then new fund startups will be there. So these are the changes which are majorly related to our taxation and to our industry. And unfortunately, there has been no particular changes made for women as it was in previous years. But this is something which was very disappointment, that we don't have any major or direct benefits attributed to women, as whereas in earlier years we had business startups, special loans and everything given to women. Now with these budget, there also come up that we will have a lot of changes for NRI perspective. If any Indian is settled abroad and is non-resident in India, they have enhanced the tax rules, have enhanced the rules for reporting purposes, especially when we are transferring money from India to any other country. There was a limit of 7 lakhs. After which, if you transfer more than 7 lakhs under liberalized route scheme, then in that case, the TCS was deducted, tax was deducted at source if your transmission or of monies into foreign land is 7 lakhs and above. Now that limit has changed to 10 lakhs. And if you're transmitting money for the purpose of education, then there has been a change that there will be no TCS at source. That is tax collected at source. This TCS was given credit when you are filing your return, but now because if you're transferring from education and up to 10 lakhs, then there will be no TCS. Another thing is that reporting, from perspective from reporting in your individual tax return, if you have any foreign assets or foreign income, that has become more important and has become more informative and detailed when we are filing the tax return. These are some changes which needs to be taken care when we are doing across the land taxes. Especially we have to be very careful when we are dealing with a person staying or resident in a country with which we have a double tax avoidance agreement. So even in that regard, there has been changes which we need to look through and check on DTA with the country when we are dealing with. Which is there like center of excellence in AI industry for education. So in as artificial intelligence is rising, and with these the education has been set up so that we have the government has allotted funds so that we can have an artificial intelligence
set up, and we can do R&D and develop that industry as well. And there will be a lot of technology and entrepreneurship and management set up. The institutes will be set up all across India, especially in Bihar, so that the state itself is growing. So far, I have completed my session on individual or taxation from the perspective of union budget. So if anybody has question, the floor is open. Sure. So, ma'am, I see a couple of questions regarding the TDS on rent with Yeah. respect to the limit of 6 lakhs per annum. Okay. So, like you rightly mentioned about the limit, which is annual, but I still see a doubt which says, can it be accrued, wherein if the limit is annual 6 lakhs, and is it supposed to be considered per month 50,000 limit? Or like if you could just throw some light on it. Yeah, so it's up to 6 lakhs, right? That you will have Right. no TDS. So there is no limitation on any monthly rent. Even if you, for example, you have a property or you have a land, or you just receive 3 months rent which exceeds 6 lakhs, still you will have to pay. TDS will be there. And if it's rented for 3 months and it is below 6 lakhs, no worries. Even if 12 months you have rented and the an annual limit is below 6 lakhs, then you need not have any TDS on that. Okay, Does so it make predominantly sense? just the annual limit to be considered. If it crosses 6 lakhs, irrespective of the months, it will be considered. The TDS will be applicable. Absolutely. And absolutely. And if you have a predetermined, just excuse me. Sure. So if you have a, Yeah, audible, audible. I'm so sorry. Au- My Audible, actually, ma'am. yeah, I'm very, very sorry. This is really very not professional. I understand, but I there is some issue with my system. I'm just making it correct. Just give me a second. I'll just change my desktop. Sure. Yeah, sure. So maybe let's continue with the question. Your question was that in case it is irrespective of the amount, Monthly. monthly amount, yes, the annual limit is 6 lakhs. And if from your pre-decided agreement, if you are renting out for 12 months and your annual or monthly rent is exceeding at the end of the year, so we would suggest that you start doing TDS from the beginning on a regular basis. Great, works understood. So, Yeah. predominantly 6 lakhs was the limit. Moving Yes. on to the second question. So, there was a question which says if you could just throw some light on tax exemptions Yeah. uh, till the limit, I mean, the income limit of 12 lakh 75,000. Yes. So, I see a lot of questions and across also on social media that, if the salary is 12 lakhs, then there is no tax. But is it what, It if is you could under just, new, it is under new regime where the right, standard deduction is 75,000. And if you have elected to file under new regime, then yes, actually, if you go by, so you will not get other deductions like HRA, transport, or any other exemptions which is there for salary. You will not get. You will only get 75,000 of standard deduction. standard deduction? Okay, Correct. works. Moving on to the next question, are there any tax benefits with respect to startups after the after the budget? After the budget, you mean to say yesterday, like after on first it was declared. After Right, that, any right, benefits who have startups after the budget was announced, right? right, Yes. right. So little startups which is there for women up to limit of I think it is which says the limit is 5 lakh. Let me just recheck once if it's okay. Sure. For women, yes, 5 lakh. For Okay, scheduled tribes and other regions, yeah. For startups, for if they 5 lakh scheduled caste, scheduled tribe, first time entrepreneurs, yes.
So would that be so the founder has to be woman founder? Yes, 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 Okay, absolutely. okay. So this is basically to promote Women, woman. yes, 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 yes. And then Understood. other exemptions are always there for other gender, if Right. the promoters and what kind of industry you're setting it up, which is already there, that those exemptions still continue. Fair enough. Moving on to the next question, it says trust registration, whether existing trust registration for 10 years, also whether 5 CR limit to check every year. Correct. Correct. So basically, when trust will be filing the returns, then they have to check the corpus of the trust. And now earlier, the registration which you were doing for the trust, it was only limited to 5 years. You had to renew every year. So now this renewal is after 10 years. And when you have these trust, you have to file your annual return. So the value of the trust would be ascertained every year so that it if there is change, then your registration could also change the nature of registration. All right, ma'am. Understood. Moving on to the next question. It says TDS on foreign remittance for educational fees. Could you Yes. please elaborate? Yes. So TDS earlier, it's TCS basically. The tax is TCS. collected. Sorry, Yeah, sorry, the sorry. tax is collected at source when you remit. But for educational purpose, there is no, as I mentioned, there would be no TCS if you're transferring money for educational purpose. So when we are transferring or remitting money, then you have to fill up the form. You need CA's permission, 15 CA CB. So all of that forms, if it's for the purpose of education, there will be no TCS. Okay, so ma'am, also FEMA would be attracted with respect to foreign remittance. Not in all case. Basically, it is more in the case what type of route you are taking for remittance. So Right. yeah, so if you're taking liberalized route, then the limit is 10 lakhs. After that you have to do it. And if in under liberalized remittance rules, it's not covered the type of remittance you're going with, then FEMA would be invoked and we have to take special permission from from the tax government. Fair enough. Understood, ma'am. Next question. It says there is a case which is written. Let me just read it out. Yeah, sure. If three people are sharing a flat and paying 30,000 per head to a flat owner, that is 90,000 rent per month, whether TDS is applicable. Yes, it is. It is, right? Because Yeah, per month. per month. And no, and not per month also, the owner is getting 6 lakhs, right? So if you Okay. look from the perspective also, if basically individual will only take will have TAN number and will deduct tax if they are eligible for tax audit, right? They have a limit. Right. Like a normal person whom I'm a salaried person, if I'm paying rent of 90,000 per month, then there is no TDS being invoked, right? But if Mhm. company who's under tax audit and a business which needs to invoke, or if any individual who's subject to taxes will have TDS. Okay. Yeah, we'll have Understood. to do TDS basically. Yeah. So if 30,000, like paying 30,000 each, and that person is, each of the person is not liable to deduct tax, then also it will be no taxability. So it will depend Yeah. on case to case who is who's the tenant, and and what is the rent also. Okay, ma'am. Moving on to the next question, it is related to charitable institution. Yep. Does the extension, okay, wait, does, okay, she's not written it properly. So it says, Uh, does the extension be applicable every year for already registered institutions under 12A, Section 12A? that is trust, right? Right. Right. Can you please repeat? Yeah, I'll just, she's written in short form. In case of charitable institution, the registration under Section 12A is extended to 10 years. So Yeah. does it go every year or for already registered cases? So she means to say already registered cases, does it automatically moves to 10 years? So Yes. yeah. The answer So is the yes. answer, yes. Okay, okay, works. Further, so far I feel all the questions are covered and yes. Okay.
So now let me start with US tax preparation. Labdi, thank you for the questions and reaching out. So as we know about the growing industry, that lot of US tax work is being outsourced in India, and there are lots of companies being set up, or chartered accountant firms are also getting into the field of US tax preparation, where they are getting connected with CPAs in US. CPA, I hope everybody knows who are CPAs. Like we are CAs in India, you have US CPA certified public accountant who are preparing the returns or strategizing. Whatever we do as a CA, they are doing the same thing. However, in India and other countries, the we have a lot of preparers, so we do not outsource generally in India, if I speak of India specifically. So but US being a very scarcely populated and high amount of hourly or manpower is very costly in that area. That's the reason that lot of work is being outsourced, and especially to India, like KPOs, what is set up, knowledge process outsourcing. So I thought this would be a very good introduction platform where I can make the comparison between Indian laws and US tax laws, which do not vary a lot. It's more like the way we have more softwares, they also, like US tax preparation also has softwares. So preparation part is not difficult. It is same as how we prepare Indian taxes, with little changes in laws, which is once you go through it or you have a good training, anybody can do it. It's not like I can't do US taxation because it's a completely different law. Me doing it since 10-15 years, I can say that. Like we have over here partnership, and we have corporations, public and private. Over there also they have similar business types, and their forms are all almost similar, where they have schedules for different type of income and different business income. So these things are there, that you have different forms, but once you are acquainted with it, then there is not much difference in tax laws. And secondly, like in India, we do not have any adjustments which we can make, or deductions which can be made from salary. Over there there are tax planning, there are strategies where you can deduct business expenses against your salary. So the concept of passive and non-passive income also remains the same for Indian and for US tax laws. And another remarkable difference what we see is that in US people are filing joint tax return. Like if you're a couple and married, you can file tax return together, whereas in India we have both the taxes different. Again, in US we do have standard deduction. Here same thing happens, that even in India we have standard deduction under new regime. So we can see that all the rules, what changes are being made in Indian taxes also, that are being aligned with global taxes, so that everything is not different, because we also have slab rates for individuals. Even US has the same thing. So this is something which I wanted to start off from the US tax preparation perspective, that there are not much changes. If we go on the line of the concept understanding, yes, forms will be different. Like for corporations, the forms are 1120, 1120S, and the forms are different, which is definitely different in India also. And unless we learn that, we are not able to file that tax return. Same thing goes with US. Another thing what we have over there, like in US we have W2, over here we have form 16. There also they have withholding taxes, we have TDS over here. So all of the rules and regulations are quite same. It's just that the name is different, and the numbers would be in dollars. Another thing is, even they have
five heads of income, that is wages, salary income, business income, other source of income, rental properties, that is Schedule E, or business income from different business, and they also have interest and dividends. Now, another thing is, like, if you are filing tax return in US, being an Indian resident, and you own a corporation there are certain forms which we need to file in US, saying what kind of non-residency you have, what kind of holding you have in US, what business you are owning there, what will be the deductions, and what money you have remitted. So these things are majorly discussed and reported on US tax side. Like we have foreign reporting here in India, over there is also foreign reporting if you have any assets out of US land. Then in US, one thing is changed, or you can say which has come up is been there, which we have not faced, is kind of estate taxes. Like if you pass on any property or any hereditary property, if you transfer, then there we have to pay taxes if the value of the property is beyond the limit. Whereas here we do not have such taxes implied until now. So that is why over there, like we have will over here, and we do have trust formation. The trust formation, non-charitable trust formation, is more actively and efficiently being used in US side. Now, I'll just cover a case law, in the sense, case law, I'm saying case study, that if an Indian is having some business and has US connections, then it is recommended, if they have SSN, is an NRI, or who has shifted back to India, it is very, very important that he continues his filings in US if he has any source of income from US. And that income, because he is tax resident in India, the income will be globally taxed in India. So that will have to be reported in India also. Indian tax, as per Indian taxes, the amount of tax paid on foreign income, in Indian tax return, you can claim that credit. And because majorly in US, the tax year is the calendar year, whereas over here we follow fiscal year, which is April to March. So we recommend that, because we have the supporting for your December return for 2020, for example, 24-25, because we have 2024 there, then it is recommended that we use 2024 income for our 24-25, so that we can substantiate with the income reported and the taxes paid at the conversion rate here in Indian taxes. So any questions, or if I'm going too fast, please let me know so that I can slow down. So do you want me to pick up the questions right as well? Yes, you Right. can, please. Sure. So I see a query which says you mentioned about the joint return wherein a Yes, couple is filing. So could yes, you yes. please elaborate on the combined deductions, or would it be individually or? No, over there in that's a great question. In US, how it works, that there are different scenarios how you're filing the return. If you're not married and you're not and filing the return, then the standard deduction is different. If you're married and filing jointly, then the deduction is different. If you're married and filing separately, then you get the single deduction. And if you are head of household, which is a new concept for India, is if you are only member, adult member, and you have a kid who's dependent on you, you can file head of household as head of household. And the standard deduction for that person is different. So as for the category of tax return filing, the standard deduction works. Wow, this was something new and interesting to know, that this is how things work in USA and Yeah. not in India, irrespective of the status. Like, wow, this is interesting. Yes. Great.
Moving on to the second question, also like you mentioned about the salary return, wherein you can claim the business expenses. Yeah, So yes. could Yeah, you just give a few example? Yeah, exactly. So let me first give how the same employee in India or in US, how this differs. Like if I'm, let me take as an example myself. I'm chartered accountant. I'm working with one MNC and I have income here from wages. Okay, that is my salary income. And I have a small gig, which is my hobby turned into business, that I have tuition classes, which does not contradict my actual job, right? It does not contradict. Then what happens if my business of giving tuitions is making losses? I cannot claim that against my wages income, right? That wage, my salary income will not offset my business losses in India. right. Whereas Hmm. in US, if the same person is doing a business and has salary income, so whatever the business expenses are there, we can claim that against salary income. So, for Wow. example, if my business, which is teaching, coaching, is completely loss making, that I have more expenses, my electricity bill and all of that, my material are very expensive, and I'm making losses, then I can set off that loss against my regular wages income. So, this is something very remarkably noted to be noticed. Yeah. Just to add here, maybe I don't want to digress, but over here, we see, maybe we are claiming that or not, even business people who are working from home. Like if I'm a freelancer in India, so I'm reporting my income, right? But being a freelancer, now what happens? I have entire room for my office. So whether I'm claiming home office deduction under my against my freelancing income, which is a business income in a way, professional income. So even that could be done, which is very actively done in US. All right, ma'am. Next question. Moving on to the next question. It says there is a student who is studying in the USA, Okay. working in the campus and is getting paid after tax deduction. Okay. So, is there a requirement for filing return? And Yes. it mentions there is no taxable income in India. Yeah. So in India, then he need not, because if the student is staying in US and has not stayed in India for 182 days, I understand then that student is an NRI for non-resident Indian for tax purposes in India, though he is from Indian origin. Now Origin. in US, if his income is below the standard deduction, like if the standard deduction over there is 15,500 for 15,000 for 2025, okay, so if his income is below 15,000, it's fine. He need not file taxes unless he expects any refunds. Because if at source his tax is deducted, TDS on his wages, and his income is non-taxable, then he should file to claim the refunds, right? So Right, it right. entirely depends how much is the income, what is the age, and how much is the tax deducted at source. Because in US, even for education, if you're paying for your education, you get credits. So this is not deduction, but you get tax refundable credits. It's like even if your tax is nil and you are eligible for credits, that credits will be paid back to you. So you have refund even without paying taxes. Okay. So Okay. you can Uh, encash the credits there. Yeah. Understood, ma'am. There is a question from Nepal which says, are we required to take any license to work for tax returns in and similar activity in USA? Yes. So basically, to file returns, you should have PTIN. That's a great question, which I should have covered for sure. PTIN, that is Professional Tax Identification Number. So with PTIN, you have to apply online on IRS website and you can get that PTIN. But that PTIN is only for filing the taxes and representing before IRS, that is Internal Revenue System, that you have to pay. Okay. Now, for having to appear before IRS for any other clients, not the return you have filed,
you need to have enrollment agent certification, and for that you have to give exams. Now, to become tax strategist and chartered accountant level of expertise and that acknowledgement, you have to be a CPA. So basically, if I want to file a tax return in US and work on taxes, I need to be PTIN, and I need to be associated with a CPA to file online. To get, there is a registration number. So if you have PTIN and you're not a CPA, you cannot e-file the return after physical filing, paper filing. All right, all right. Yeah. Maybe the last question for this session. I'm just reading out the question. If a Okay. person goes for employment to USA and is earning salary, can he also do a business side by side? As long his employer agrees and what kind of business he is doing, and Fair enough. also depends on what kind of visa he has. Right, right, right. So Yeah. it basically depends on case to case. Absolutely, absolutely, absolutely. Right, right. With this, I'll end the session and I mean the Q&A round. And running on to a vote of thanks. Heartfelt gratitude to you, ma'am. A wonderful session. Comprehensively, you've explained each and everything and very nicely answered all the questions. Thank you. Thank you very much for your time and efforts for the session and very nicely explained. Thanks for your time. Oh, thank you. And I'm really sorry for this technical glitch. It was really bad on my part. Something wrong, like some browser issues, but now I had to download the Zoom to get it connected. But Right. thank you. Thank you for bearing with me, and thank you for your patience, and thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. So, good evening, everyone. I'm honored to welcome you today to the webinar on the cervical cancer vaccination and prevention. Yesterday, February 4th, marked the World Cancer Day, and we are taking a significant step forward by focusing on cervical cancer. It's my pleasure to introduce our esteemed speaker, Dr. Pushpa Sethi, a renowned gynecologist and obstetrics with over 40 years of experience, specializing in normal and cesarean deliveries, hysterectomy, and menstrual disorders. She has handled thousands of complex cases with expertise and played a key role in establishing healthcare in Gurugram. She is a member of Indian Medical Association and a past president of Gurugram Indian Medical Association. Dr. Pushpa is a recipient of Lifetime Achievement Award by the Indian Medical Association and has served as national president of the Federation of Indian Menopause Society 23-24. Dr. Sethi will share her expertise on cervical cancer prevention, vaccination, and treatment. Let's work together to raise awareness and promote action against cervical cancer. Without further ado, I wish Dr. Pushpa all the best for her future endeavors, and I invite Dr. Pushpa to take the stage. Thank you. Over to you, Dr. Pushpa. Thank you very much, Sonia. Yes. A very good evening to all of you. I think the burning topic today is cervical cancer. क्यों है ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि all the cancers that you have in the body, I mean, right from the female cancers plus all the cancers of the abdomen or any other part, cervical cancer is the only cancer जिसके पास एक vaccination है. और cancers होते हैं, आप सोचो कि उनका प्रिवेंशन है, गुड लाइफस्टाइल, गुड हैव नॉर्मल बॉडी वेट एंड सो मेनी अदर थिंग्स, नो पोल्यूशन, जहाँ लंग कैंसर इन्वॉल्व है. बट एक ऐसा वैक्सीनेशन जो एक कैंसर को बचाता है, आपको पूरे जीवन बचाव देता है, दिस इज ओनली इन सर्वाइकल कैंसर. सो दैट सडनली
from the last 2 3 years, it has become very very common that we do a lot of awareness programs in schools, colleges, women's associations, and wherever we are able to reach out. As a doctor, as I am a very active member of Rotary organization, so through whatever platform we get, we try to reach out to people, spreading awareness, spreading knowledge about what cervical cancer is all about, और कैसे इस वैक्सीनेशन का आप फायदा उठा सकते हैं. So can I share my screen? Yes, doctor. So जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर्स हैं फॉर अ वुमन टू बी अवेयर अबाउट, इट्स द ब्रेस्ट कैंसर एंड द सर्वाइकल कैंसर. और इन दोनों में हम लोग बहुत एज मेडिकल पीपल, एज सोशल कनेक्टेड टू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म से बहुत काम कर रहे हैं. तो आज हम जो बात करेंगे वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे. सर्वाइकल कैंसर क्यों इसको हम कहते हैं, व्हाट इज सर्विक्स, हम ये सब क्वेश्चंस आपको आंसर करेंगे इस प्रेजेंटेशन में. व्हाट इज अ सर्विक्स, सर्विक्स क्या है जिसके नाम पर सर्वाइकल कैंसर नाम पड़ा है इस कैंसर का, क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे किस कारण से होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलेगा आपको सर्विक्स का कैंसर हो गया है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके अलावा और क्या क्या इससे रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंड व्हाट शुड यू नो अबाउट स्क्रीनिंग. दो चीजें होती है, एक होती है अवेयरनेस, एक होता है स्क्रीनिंग, और एक होता है प्रिवेंशन. स्क्रीनिंग मतलब कि वो टेस्ट जिसको कराने से आपको पता चल जाए कि आपको शुरुआती सिम्टम्स कैंसर के आ चुके हैं. एंड व्हाट यू शुड नो अबाउट द वैक्सीनेशन. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ वैक्सीनेशन का होगा ही. सो व्हाट इज अ सर्विक्स. हमारी जो बच्चेदानी होती है उसके कुछ हिस्से होते हैं जो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ. ये नले हैं, इसको हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं. ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है, सारा यूट्रस. और जो इसका मुंह होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मुंह है, इसको Ma'am, हम your screen सर्विक्स is not बोलते visible. Ma'am, your screen is not visible. The PPT which you have shared is not visible. हैं. So, yeah. Uh, सो आई थिंक बिकॉज दे वर हैंडलिंग द ऑपरेशनल पार्ट, तो वो इनको ही तो नहीं कराना पड़ेगा. so it's okay if you can have your deliberations without the PPT also. आई यू श्योर? तो Yeah, yeah, yeah. ये तो दोबारा वापस जाके करूँ फिर? Tech team, can you help? Mr. Nisar, yeah, please help ma'am to share the PPT, please. Nisar ji, Nisar, पुष्पा मैम की हेल्प कीजिए, पीपीटी शेयर करने में प्लीज. पहले मुझे इसको वापस जाना पड़ेगा, ये इसको वापस कैसे जाऊंगी? ये मैंने फुल स्क्रीन कर दिया था. पहले आप in the lower bar you have to open that PPT and then you have to click the share button. नहीं, वो तो मैंने कर लिया था, बिकॉज ये तो मेरे स्क्रीन में तो ये पूरा खुला हुआ है पीपीटी मेरा. Okay, okay. So हाउ डू आई गो बैक एंड गो बैक टू द, हाउ डू आई क्लोज इट, इसका escape button, I think you can use escape. राइट राइट, एस्केप बटन, राइट. Hmm. सो Okay. अभी यू आर नॉट एबल टू सी इवन नाउ? No, no, no. You have to click on the share button and then select the PPT. हाँ, नहीं नहीं, वो मैंने कर दिया. आई हैव डन Acha. ऑल दैट, बट प्रॉब्ली यू आर नॉट एबल टू सी. आई एम एबल टू सी. Uh, because others I think don't are not able to see. Saurabh, या can you see the screen? नो मैम. No, it's not visible, ma'am. इसका स्टॉप प्रेजेंटेशन वाला कहाँ चला गया? निसर, आप मैम की हेल्प कीजिए ना इसमें. With any desk you can help, ma'am. No? Ma'am, just wait. Our tech team will help you. या मेरा पीपीटी खुला हुआ है एक्चुअली, और ये स्टॉप प्रेजेंटेशन का मुझे नहीं मिल रहा.
नहीं ये खुला। नहीं, शेयर मैंने वो शेयर करके और खोल लिया अपना पीपीटी, मुझे दिख रहा है लेकिन उधर नहीं दिख रहा। अब मुझे स्टॉप प्रेजेंटेशन करके इसको बंद करूंगी तो आप खोलो इसको, क्योंकि प्रॉब्ली आप ऑपरेट कर रहे हो ना, इसलिए। एक इधर वो होता था स्टॉप प्रेजेंटेशन, वो मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, इसमें एक्सेप्ट दो आते हैं, एक तो प्लेन एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट में वाइट ये कुछ बना हुआ है। एक फुल फुल लेंथ एक्सेप्ट है, एक हाफ एक्सेप्ट, एक हाफ डिसमिस है, कौन सा वाला करूं? हाँ, नहीं नहीं, दो आए हैं, दो आए हैं, एक तो फुल है ग्रीन में और एक में नीचे हाफ ग्रीन है एक्सेप्ट, हाफ है रेड डिसमिस। कौन सा करूं, ऊपर वाला करूं? नहीं, दोबारा आप दोबारा खोलो जरा। हाँ, करा। हाँ, डन। कैन यू सी नाउ, Yes, सोनिया? yes, yes, ma'am. It is Yes, ma'am. visible. Yes, ma'am. Yes, Yes, perfectly ma'am. fine. It is visible. ओके, नाउ इट इज बिकम ब्लैंक फॉर मी, बट आप स्लाइड मूव करो। Slide, you can move, ma'am. We can't move. हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं आ रहा स्लाइड में, व्हाट इज कैंसर ना, वो सारा जो लिखा हुआ था रिटन पार्ट नहीं आ रहा। अच्छा. It will come. Just click, I think. हाँ. अ, Next. Yes, yes, yes. हाँ, Next ठीक है, button. Yes. ठीक है। हाँ, आ गया, आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थे, नाउ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन ना, Yes, yes. Yes, ma'am. सोनिया? Yes, ma'am. तो ये आई वाज टेलिंग एवरीवन कि ये हमारा जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है, इसका एक मुंह होता है जिसको हम माउथ ऑफ द यूट्रस बोलते हैं, या मेडिकल टर्म्स में सर्विक्स बोलते हैं। और यही कैंसर है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और इसके अलावा ओवरीज होते हैं जो अंडेदानी होती है, और ये नीचे का पार्ट जो होता है इसको हम विजाइना बोलते हैं। तो ये मेनली ब्रॉडली इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, और इसको हमने बड़ा करके यहाँ दिखाया है। दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्विक्स, ये है वो पार्ट जिसका कैंसर होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। Okay. तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं और कैंसर सेल्स क्या होते हैं, क्यों कैंसर सेल्स बन जाते हैं और कैसे बनते हैं। सो नॉर्मल सेल्स हमारे अंदर शरीर में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ नॉर्मल सेल्स हैं, जो हर टाइम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो नए सेल्स बनते हैं वो आगे चल के मेच्योर सेल्स होते हैं, और जो पुराने सेल्स होते हैं दे डाई ऑफ, क्योंकि पुराने सेल्स एज दे बिकम ओल्डर आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। सो वो डाई ऑफ हो जाते हैं और नए सेल्स उनका दे टेक देयर प्लेस। So this is how the body cells function. But at times what happens due to certain conditions like viruses, chemicals in tobacco, repeated damage, or environmental factors, yeah, so many other factors, ये जो cells हैं, they start dividing at millions of times at faster rate than a normal cell divides. ठीक है ना? जब वो इतने fast divide करेंगे, millions of times faster than a normal cell, तो वो जो वहां पर है एक गांठ बन जाएगी सेल्स की। वो इससे पहले कि मेच्योर हो, ओल्डर सेल्स हो, डाई ऑफ हो, वो नहीं हो पाता। बस छोटे सेल्स इतने ज्यादा बन जाते हैं कि वो गांठ बनाते जाते हैं। दिस गांठ इज कॉल्ड अ ट्यूमर। And old cells, they refuse to die. Now because these cells are young cells, they are not, I mean mature cells, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए जहां पे भी ट्यूमर बनता है कैंसर का, वो ऑर्गन अपना काम नहीं करता।
और फिर वो वहां से, क्योंकि इतने ज्यादा हो जाते हैं, वहां से वो टपकना शुरू हो जाते हैं एंड दे गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज हाउ अ कैंसर मेटास्टेसाइजेस टू एनी अदर पार्ट वेरेवर इट कैन। आपका जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो ब्रेन में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, बोन्स में चला जाएगा, ऐसे ही वो सेल्स जहां जहां बिखरते जाएंगे वहां वहां वो कैंसर फैलता जाएगा। सो अब हम यहाँ वापस आते हैं कि ये सर्विक्स था जो हमने माउथ ऑफ द यूट्रस आपको बताया था। अब जब कैंसर बनता है उसका अर्ली स्टेज ये है, आप देखेंगे छोटा सा हल्का सा व्हाइट पैच बना, यहाँ पे एक छोटा सा व्हाइट पैच बना। इस स्टेज में अगर पेशेंट आ जाता है डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट इज वेरी गुड। लेकिन होता क्या है कि आपको इस स्टेज का पता नहीं चलता, धीमे धीमे ये फैल जाता है। आप देख रहे हैं व्हाइट पैच फैला, यहाँ से इतने छोटे से ये व्हाइट पैच बड़ा हुआ और इस तरह करके वो चारों तरफ फैल गया। Now the patient has to reach the doctor in the early stage. अब अर्ली स्टेज में पेशेंट कैसे पहुंचेगा डॉक्टर के पास, कि अगर वो अपनी स्क्रीनिंग कराएगा प्रॉपर, या वो डॉक्टर के पास बराबर दिखाने जाता है। इंडिया में स्क्रीनिंग कराना इज नॉट अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि स्क्रीन कराना तो इज अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज यू आर ऑल राइट, यू हैव नो प्रॉब्लम, व्हाई शुड यू गेट अ स्क्रीनिंग डन, एंड गोइंग टू डॉक्टर फॉर अ जनरल हेल्थ चेकअप इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉमन। सो अल्टीमेटली हमारी कंट्री में जब आते हैं पेशेंट्स, द कैंसर हैज ऑलरेडी स्प्रेड। सो ये देखिए, ये नॉर्मल सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह, ये कैंसर वाला बन गया, ये हाई ग्रेड कैंसर हो गया, और ये अभी शुरुआती कैंसर यहाँ से शुरू हुआ, ये नॉर्मल है, यहाँ हल्का सा बना और गाढ़ा, और ये कैंसर फैला हुआ कैंसर है। ये देखिए, दिस इज अ नॉर्मल विजन, ये हम एक नॉर्मल आपको दिखा रहे हैं, हमें दिखता कैसा है जब एक कैंसर चारों तरफ बच्चेदानी के मुंह पे फैल गया होता है। Now, the most interesting part about cervical cancer is that it is caused by a virus. वायरस से क्या क्या होता है आप सबको मालूम है। वायरस से पहले बड़ी माता होती थी, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते थे, चिकन पॉक्स होती है, मीजल्स होते हैं। कोविड वायरस इज द लेटेस्ट जो हम सबको ही पता है। इट वाज कोविड वाज कॉज्ड बाय अ वायरस, एंड कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बनी जिसको हम सब ने लगवाया। तो ऐसे ही research found out that the cancer cervix was caused by a virus, and this virus is called the human papilloma virus or the HPV virus, and it looks something like this. सो एचपीवी वायरस के, हर वायरस के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं। आपने देखा था ना, कोविड वायरस फर्स्ट वेव में आया तो कोई और स्ट्रेन था, सेकेंड वेव में आया तो कोई और स्ट्रेन था, फिर आया तो कोई और स्ट्रेन था। सो same way the HPV virus has a lot of strains, but the four most important strains that you should know are number 16 and number 18. So number 16 and number 18 are the ones that will cause cancer. They will cause more than 75% cervix का cancer and more than 50% of vaginal and vulvar cancer. मतलब जो बच्चेदानी का आगे का मुंह होता है उसका कैंसर। And HPV 6 and 11 they will cause benign warts, मतलब ऐसे छोटे छोटे गांठे आपके बाहर में आ जाएं स्किन पे, एंड दे आर कॉल्ड वॉट्स, इनोजेनाइटल वॉट्स, एंड दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय एचपीवी नंबर 6 and 11, एंड दे आर बिनाइन, क्योंकि ये कैंसर में तब्दील कभी भी नहीं होते। तो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, एचपीवी इन्फेक्शन किनको होता है? वंस यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव, ऑल ऑफ अस, मोर देन 80% हम लोगों को एचपीवी इन्फेक्शन होगा ही होगा, उससे बचाव नहीं हो सकता। सो बाय द एज ऑफ 50 आपको 80-90% वुमेन को हो चुका होता है एचपीवी इन्फेक्शन। पर क्या 80-90% वुमेन को कैंसर होता है? नो, देयर आर नो सिम्टम्स। आपको जब एचपीवी वायरस अंदर जाता है, वो सर्विक्स पे ही जाके, जो मैंने आपको हिस्सा दिखाया, उस पे ही जाके बैठता है, वहीं पे अपना घर बनाता है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं, एक सिस्टम होता है कि हमारे अंदर जो वायरस जाएगा, हमारा सिस्टम उससे लड़ता है और उसको खत्म कर देता है। सो आपने देखा है कि जैसे मौसम बदलता है, सर्दी आती है, तो बहुत लोग वो हर दूसरे दिन बुखार, खांसी, जुकाम हो जाएगा, और कुछ लोगों को नहीं होता। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इम्यून सिस्टम। सो एचपीवी वायरस को भी इसी तरह आपका इम्यून सिस्टम लड़के खत्म कर देता है इन 90% ऑफ केसेस। बट जो बच जाते हैं 10%, उनका क्या? उनमें वो अंदर अपना जो सेल में अपना घर बनाता है, सेल में सेलुलर चेंजेस लाके over a period of time it will cause cancer. So majority will clear the infection without developing any disease, but few women develop precancerous lesions, and over a period of time, जो कि कुछ महीने से 9-10 साल तक हो सकता है, उस दौरान उनको एक full fledged cancer बन जाएगा। So, cervical cancer is the commonest cancer in Indian women. 200 women die in India every day because of cervical cancer. 200 ladies India में हर दिन मरते हैं because of cervical cancer. या
8 women every hour और 1 woman in every 7 minutes. हर एक 7 मिनट में इतनी देर में हम ये अपना प्रेजेंटेशन करेंगे तो पता नहीं कितनी लेडीज, आप सोचो 5 लेडीज कम से कम वुड हैव डाइड ऑफ सर्वाइकल कैंसर. सो इट इज दैट बैड, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, स्क्रीनिंग प्रोसेस में कोई बिलीव नहीं करता, और जो कैंसर का इंजेक्शन आया उसको लगाने के लिए हमको इतना लोगों को समझाना पड़ता है, फिर भी वो नहीं मानते कि लगाना चाहिए. So, cervical cancer is the most common cancer in Indian women, and it is the most common cancer in India. अगर हम सारा वर्ल्ड का डेटा देखें तो इंडिया मेक्स अप अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, हमारे कंट्री में 16% उसकी पॉपुलेशन रहती है, बट वी हैव 27% ऑफ द टोटल वर्ल्ड इंसिडेंसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर. आप देखिए कितना डिस्क्रिपेंसी है 16% में और 27% में. 27% लोड हमारी पॉपुलेशन विमेन की लेके चलती है सर्वाइकल कैंसर की, अगर हम पूरा वर्ल्ड से कंपेयर करें तो. द नेक्स्ट कैंसर दैट कम्स टू सर्वाइकल कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर. सो ये दोनों कैंसर्स बहुत बहुत कॉमन है इंडियन विमेन में, बट सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया इज मोर कॉमन देन ब्रेस्ट कैंसर. इन अदर कंट्रीज इट इज ब्रेस्ट कैंसर विच इज मोर कॉमन देन सर्वाइकल कैंसर. नाउ हाउ डज सर्वाइकल कैंसर टेक प्लेस? One of the commonest causes is poor hygiene. So poor hygiene in women, क्योंकि आपकी अगर पुअर हाइजीन होगी तो वायरस और इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी आप में आएगा. तो दैट इज वन कॉज. एंड सेकंड कॉज इज हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज. नाउ आई एम श्योर अगर आपने एक पहले टाइम में, आई थिंक ये काफी पहले की बात है, 10-15 साल पहले की, एक प्रोग्राम आता था जो लंदन से आता था, और जो हमारा बिग बॉस है वो उसको देख के स्टार्ट हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा. उसमें ये लड़की थी जुडिथ, जुडिथ इसका नाम था. And when that program was going on, she suddenly disappeared. You know, सबने वो हुआ कि she is not feeling well, so she discontinued midway, क्योंकि लंबा चलता था प्रोग्राम, साल भर, ये बीच में लड़की चली गई. And it was known that she must have been around 26, 27 at that time. She developed cervical cancer. It was diagnosed and she could not be saved. So अब देखिए कि कैंसर का एक जमाने में ये होता था कि बड़ी उम्र में होता है, 40 साल 50 साल में होता है, उससे पहले नहीं होता. नाउ इट इज नॉट सो. यंग पीपल आर गेटिंग कैंसर, और जितने यंग पीपल में कैंसर होगा, जितना कम एज उतना ही ज्यादा एग्रेसिव कैंसर होता है. सो दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लूजिंग लाइफ देन एन एल्डरली पर्सन. सो अर्ली स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर में कोई सिम्टम नहीं होता, इसलिए मिस हो जाता है. व्हेन एडवांस्ड देयर कैन बी अदर सिम्टम्स. जब भी एडवांस हो जाता है तब ये सिम्टम आना शुरू होते हैं, तब पेशेंट को लगता है मुझे क्या हो गया और क्या सिम्टम्स है ये. A little bleeding between periods. आपको पीरियड्स के बीच में अगर ब्लीडिंग आती है तो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली. गो टू योर डॉक्टर, गेट योरसेल्फ चेक्ड अप. इट कुड बी, शायद ये एक पहला सिम्टम हो सर्वाइकल कैंसर का. ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपका कॉन्टैक्ट हुआ हस्बैंड से एंड आपको सुबह के टाइम, रात के टाइम ब्लीडिंग लगा, स्पॉटिंग लगी, प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड. एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जिसमें स्मेल आती है, ऐसा डिस्चार्ज बराबर होना, या सडनली नीचे के पेट में बहुत लोअर एब्डोमिनल सिवियर पेन होना, या ड्यूरिंग इंटरकॉर्स पेन होना, कंटिन्यूअस बैक एक रहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं. कई बार हम इनको नजरअंदाज कर जाते हैं कि अरे चलो ऐसे ही हो गए, और हम डॉक्टर पे नहीं जाते हैं, पर ये सिम्टम्स एडवांस स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के हैं. और उससे बाद भी आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो देन यू सडनली स्टार्ट लूजिंग वेट एंड देन यू गो टू योर डॉक्टर. नाउ व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज ऑफ कैंसर में डॉक्टर पे पहुंचे, कितना बड़ा ट्यूमर था, आपकी उम्र कितनी है, क्या अभी आप छोटी उम्र के हैं और आप बच्चा चाहते हैं, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है. तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो होता है जहां आप अर्ली स्टेज में पहुंच जाते हैं, बहुत शुरुआती स्टेज में पहुंचे, जैसे मैंने आपको दिखाया था शुरू में, छोटा सा एक वाइट दाना है और वो कैंसर की टेस्ट में आया ही कैंसर है. तो उस स्टेज में हम बच्चेदानी को बचा सकते हैं. अगर यंग पेशेंट है वो बच्चे भी कर सकते हैं आगे. उसमें दो तरीके होते हैं कि एक तो हम उस जगह को इलेक्ट्रिक कॉटरी से बर्न कर देते हैं, और दूसरा होता है कि हम कोल्ड कॉटरी भी आती है, उससे हम उसको एग्लूटिने उसका वो कर देते हैं, जमा देते हैं, मतलब इट इज फ्रोजन, फ्रीज कर देते हैं उस एरिया को और वो एरिया खत्म हो जाता है. सो इस स्टेज में अगर आप डॉक्टर पे पहुंचते हैं, देयर आर एक्सीलेंट चांसेस ऑफ योर सर्वाइवल एंड यू कैन आल्सो हैव बेबीज, क्योंकि बच्चेदानी को इस स्टेज में बचाया जा सकता है. लेकिन अगर आप मिडिल स्टेज में पहुंचे, मीडियम स्प्रेड ऑफ कैंसर में पहुंचते, तो आपकी सर्जरी करना जरूरी हो जाता है. अगर सर्जरी सक्सेसफुल होती है और कहीं फैला नहीं है तो फिर आपकी चांसेस सर्वाइवल आर गुड.
बट अगर आप लेट स्टेज में पहुंचते हैं तो एक्सटेंसिव सर्जरी होती है, आपको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, आपको रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, और आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल मे नॉट बी दैट गुड। तो एचपीवी वायरस और भी कैंसर्स बनाता है, जिसकी हम यहाँ पे इतनी चर्चा नहीं करें क्योंकि हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं। ये कैंसर्स बहुत कॉमन नहीं होते, इसलिए हम लोग इनका बहुत ज्यादा इन पे हम इतना ध्यान नहीं देते। विजाइनल कैंसर, बल्बल कैंसर, जेनिटल वॉर्ट्स, ये और चीजें हैं जो एचपीवी वायरस से होते हैं। बट मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा सर्वाइकल कैंसर है, ये वजाइना है। सो यहाँ का कैंसर जो होता है वो वजाइनल कैंसर है। सो ये कैंसर्स इतने कॉमन नहीं है। जेनाइटल वॉट्स भी आजकल इंडिया में, जेनाइटल वॉट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मस्से होते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये इंडिया में अब बहुत बढ़ गए। पहले से देखिए आप इंसिडेंस कितना ज्यादा, ये 2004 का डेटा है, कितना बढ़ गया। व्हाई इज दिस? बिकॉज हियर इन इंडिया ऑल्सो, लाइक इन द वेस्टर्न कंट्रीज, नाउ आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, आई गो थ्रू इट every day, that young girls, they are getting sexually active at a younger age than पहले तो होता था शादी के बाद। Now it is not with the open society. The girls are sexually active at a younger age and then they develop these warts, but ये warts जो हैं ये benign होते हैं। So कैसे अपने को बचाया जा सकता है? 3 तरीके हैं। अवेयरनेस, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो ही आप अपने को बचा सकते हो, अगर आपको नॉलेज ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है। नंबर 2, स्क्रीनिंग, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अगर आप के बारे में अगर हम बात करें तो मैमोग्राम एक एक्सरे होता है जिसको आपको कराना चाहिए हर 2 साल में एक बार। तो अगर उसमें उसको कराने से आपके बहुत शुरुआती लक्षण पकड़े जा सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है पैप्समेयर, आपने सबने पैप्समेयर का नाम सुना होगा। पैप्समेयर आपको हर साल या हर 2 साल में एक बार कराना चाहिए। उसमें आपका जो सेल चेंजेस हैं कि ये कैंसर की तरफ सेल्स जा रहे हैं, वो टाइम से पता चल जाएगा और आपको टाइम से आपका ट्रीटमेंट हो सकेगा। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में के मतलब सिर्फ सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीनेशन, ये खाली इसी कैंसर में अवेलेबल है। तो पैप्समेयर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पैप्समेयर क्या होता है? पैप्समेयर में एक ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम वजाइना से अंदर डालते हैं। एक हमारे हाथ में तीली होती है और इसके मुंह से हम थोड़ा सा फ्रेरी टाइप होती है, इसको घुमा के सेल्स कलेक्ट करते हैं, उसको एक सोल्यूशन में डाल देते हैं और उसका टेस्ट होता है। So this is called a pap smear. So all the, I think ladies, I am sure would have heard about it. So कब से शुरू होना चाहिए? Once you are married, once you get sexually active, आपका पैप स्मेयर बराबर जांच होना चाहिए। आजकल जो हम कर रहे हैं स्लाइड वाला नहीं करते, ये पहले करते थे, या फिर मास स्क्रीनिंग में हम करते हैं अभी भी स्लाइड वाला, लेकिन नॉर्मली आजकल हम लोग सेल साइटोलॉजी करते हैं। तो एक बार अगर आपका वो नेगेटिव आता है और आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो आप एवरी 5 इयर्स भी करा सकते हैं। सो ये टेस्ट जो है आप अपने डॉक्टर पे जाएं और आप उनको बोलें कि मुझे कोई अपनी जांच नहीं कराने आई हूँ लेकिन मैं अपना स्क्रीनिंग कराने आई हूँ, मेरा आप पैप स्मेयर दीजिए, और आई एम श्योर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको रिपीट कब कराना है। नाउ वैक्सीनेशन के बारे में हम बात करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एवरी लेडी शुड नो। वैक्सीनेशन इज द ओनली फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग तो ये कि आपको जल्दी डायग्नोज होगा, लेकिन बचाव कैसे हो कि आपको हो ही ना कभी। सो दैट इज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन विच इज अवेलेबल टू अस। 2 तरह की वैक्सीनेशन हैं हमारे पास, क्वाड्रीवैलेंट जिसमें ये 4 स्ट्रेन जो मैंने आपको बताए थे कवर होते हैं, और बायवैलेंट जिसमें खाली 16 और 18 नंबर कवर होते हैं। सो ये 2 तरह की वैक्सीनेशन हैं। इट इज गिवन बाय अ सिंपल सिरिंज एंड नीडल, जैसे कि आम टीका लगता है बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। दिस वैक्सीनेशन इज अप्रूव्ड वैक्सीनेशन, ऐसे नहीं है कि इसमें अप्रूवल नहीं है। इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज। गाइडलाइंस वेरी, हर कंट्री की गाइडलाइन फर्क हो सकती है, बट वैक्सीनेशन जो है टीका वो सेम है। सो एचपीवी इंड्यूस्ड लीजन्स कौन से कवर करता है? ये सर्वाइकल कैंसर को कवर करता है और प्री कैंसरस लीजन्स को कवर करता है, और इनमें हमें 98% सक्सेस है अगर आपने वैक्सीन लगाया हुआ है तो। वल्बल वजाइनल प्री कैंसरस लीजन्स, उनमें 100% बचाव है, और जेनाइटल वॉर्ट्स में 100% बचाव है। तो आप देखिए अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तो आपको कितना, आई मीन आप इट इज आप सोच भी नहीं सकते, एक आप बिल्कुल जानलेवा कैंसर से 98% प्रोटेक्शन आप अपनी जिंदगी भर का आप अपने को दे रहे हैं, और बाकी कैंसर जो हैं जो कि इतने कॉमन नहीं है उनमें आप 100% प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये कैसे लगाई जाती है?
और कैसे काम करती है, हाउ डज द वैक्सीन वर्क। हर बीमारी में जैसे आपको वैक्सीन लगाते हैं और कहते हैं आपको ये होगी नहीं कभी भी, या आपको एक 10 साल बाद या 5 साल बाद बूस्टर लगाना पड़ेगा, इट गेट्स योर बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। आपको पता है ना, एंटीबॉडीज आप समझ लें, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, जैसे छोटे छोटे सोल्जर्स हैं हमारे बॉडी में, वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में अगेंस्ट द वायरस एक्ट करते हैं। कभी भी कोई वायरस अंदर जाएगा तो वो टिप एक एंटीबॉडी होगा उसी वायरस के लिए, दूसरे वायरस पर नहीं इफेक्ट कर सकता, तो उसको लड़के वो खत्म कर देगा। तो अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो ये एंटीबॉडीज आपके शरीर में बन जाते हैं। आपको जब भी एचपीवी इन्फेक्शन होगा, वायरस आपके बॉडी में जाएगा, तो ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगे और वो उसको तभी के तभी मार देंगे। इस तरह ये एक्शन करते हैं। So these antibodies protect your body from HPV infection and thus prevent you from the cervical cancer. Who should take the vaccine and when? So ideally, this vaccine is taken between 9 and 15 years. 9 से 15 साल की बच्चियों में सबसे इम्पोर्टेंट है ये वैक्सीन देना, और उन बच्चों में इस उम्र में सबसे अच्छे एंटीबॉडीज बनते हैं और सबसे अच्छा आजीवन प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन आप 45 साल तक लगवा सकते हैं, बट टिल द टाइम यू गेट सेक्सुअली एक्टिव, और जो कि हम इंडिया में 25-26 साल मान के चलते हैं, तब तक तो लगवा ही लेना चाहिए। अगर आप उसके बाद लगवाते हैं आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रोटेक्शन ना मिल सके। mothers who are ladies who are pregnant cannot take the vaccine during pregnancy। आप प्रेगनेंसी के दौरान ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसके डोज क्या होते हैं? डोज शेड्यूल जो है क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, जो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट था, उसके 3 डोजेस होते हैं। आज से 2 महीने बाद और आज से 6 महीने बाद। अगर आपने एक वैक्सीन आज लगवाया तो आपका दूसरा डोज पड़ेगा 2 महीने बाद, तीसरा पड़ेगा 6 महीने बाद। ये जो है 15 साल के ऊपर सब लोगों का शेड्यूल है। 15 साल से नीचे सिर्फ 2 डोज लगते हैं, जैसे आज लगा और फिर 6 महीने बाद लगा। बीच वाला डोज बच्चों में नहीं लगता, सो 2 डोजेस लगते हैं। एंड हाउ सून विल द प्रोटेक्शन स्टार्ट वर्किंग? आपने जब वैक्सीन लगवाया तो उसके 1 महीने के अंदर ये अपना काम करना आपके शरीर में शुरू कर देती है। हाउ लॉन्ग विल द प्रोटेक्शन लास्ट? कितना टाइम तक प्रोटेक्शन चलेगा? आज की डेट में इस 3 डोज लगवाने के बाद आपको आगे की लाइफ में कोई बूस्टर चाहिए ऐसा हमें नहीं मालूम है, लेकिन अभी रिसर्च जारी है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी ये बहुत पुराना नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में पता हो चले कि आपने जो डोज लिए, 3 डोज या 2 डोज, उसके 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको 1 डोज और लेना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ 3 डोज या 2 डोज शेड्यूल, 2 डोज बच्चियों के लिए 9 से 15 साल, 15 साल से 45 साल, 3 डोज का शेड्यूल, ये हम फॉलो करते हैं। आज के पहले हमारे पास खाली बाहर की इंपोर्टेड वैक्सीन अवेलेबल थी, जो कि गार्डासिल के नाम से थी और बहुत महंगी थी। आज के डेट में हमारे पास हमारी इंडियन वैक्सीन आ गई है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, जिसने कोविड वैक्सीन बनाई थी। उसका नाम है सर्वावैक एचपीवी वैक्सीन, और ये वैक्सीन हम लोग आजकल बहुत यूज कर रहे हैं। 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज में हम 2 डोजेस देते हैं, 0 and 6 months, जैसे मैंने आपको बताया। 15 से 26 साल 3 डोजेस, 0 to 6। और सेकेंड, अगर बाई चांस ऐसे होता है कि सेकेंड डोज लगाने में आपको कोई, आप कहीं चले गए या आप कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप थर्ड डोज थोड़ा जल्दी भी ले सकते हैं, जिससे आपकी डोज मिस ना हो। The second dose should be administered at least 1 month after the first dose। और अगर आपकी 1 महीने में मिस हो गई, आप उसको 2 महीने 3 महीने पे भी लगवा सकते हैं, लेकिन विद इन 1 ईयर आपके तीनों डोज का शेड्यूल खत्म हो जाना चाहिए। ये सारा आपको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं चाहूंगी, तो टेक होम मैसेज शुड बी दैट सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टिंग इंडियन women। इट इज अ प्रिवेंटेबल कैंसर। You can protect yourself and your daughters and be 100% safe with the combination of the vaccine and screening। बच्चियों में आप वैक्सीन लगाएंगे, और 25 साल से ऊपर में जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं वो साथ में पैप स्मीयर भी कराएंगे। थैंक यू सो मच। I think you can stop sharing the presentation. So we can check whether there are, if there are any Q&As for ma'am. Yeah. I think the presentation can be off now. Yeah. This presentation is stopped. Yeah. So Hi. So I would just check the Q&A. I would just go one by one. Give me a minute.
Yeah. So there are just two questions which I see on the yeah. So the questions are not really related to cancer or vaccination, but it's predominantly just in general to understand, like like most of us deal with stress in our daily life. So if you could just give, like few suggestions, or maybe like how to just ease down on how things get when you get very hectic with work. Sorry for the disturbance. Stress, how you can ease down is actually totally dependent upon your own self. Right. You know, you have different type of personalities actually. Some Right. personalities are such that they do will not take up. They may have any amount of stress, they will not let it affect their mental status or their डे टू डे लाइफ. लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं हुआ लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लोन अप हो जाता है. उनकी लाइफ, उनकी मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है. सो जो लोग को इफेक्ट नहीं होता उनको तो कुछ करना नहीं है बिकॉज दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज और ये सब इनबॉर्न होता है हमारे अंदर. इट्स नॉट दैट कि काफी कुछ इन्वॉल्व होता है. बट जिन जो लोग को बहुत इफेक्ट होता है स्ट्रेस से, सो मेडिटेशन, योगा, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं. हम लोग अपने पेशेंट्स को यही बताते हैं बिकॉज वी आर नॉट बेसिकली साइकोलॉजिस्ट. वी ऑलवेज टेल देम कि आप मेडिटेट करो, योगा करो, बिकॉज stress is related to a lot of problems happening in women, खासकर बच्चियों में आजकल. Right. स्कूल टाइम लड़कियों में इतना स्ट्रेस होता है कि दे हैव दीज हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और जो एक पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इतनी Right. कॉमन हो गई है बच्चियों. दिस हैपेंस वेरी कॉमनली बिकॉज दीज गर्ल्स अंडरगो लॉट ऑफ स्ट्रेस. और स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस से ईटिंग, यू ईट टू वेव स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए आप खाते Right. रहते You हो. end up eating You more put on or weight. maybe thoda junk or सो आपको ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी से आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, आपको पीसीओडी होता है. तो ये सारी चीजें, और आगे आने वाले एज में एज यू एडवांस इन एज उसके अलग प्रॉब्लम्स होते हैं. आपको जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा आपको हाइपरटेंशन होगा, आपको शुगर होगा, उनसे आपको हार्ट प्रॉब्लम होगा. सो ये सारा विशियस साइकिल है. स्ट्रेस right. आजकल हर चीज में पहला नाम स्ट्रेस का आता है. सो Right. उसको कैसे रखें, that a lot you have to figure out yourself. लेकिन yes, meditation, yoga and these things really help in Right. making. Right. Right. Thank you, ma'am. It was a great insight. Moving on to the second question. So it is written like it's regarding the vaccine. So it Yeah. says that initially there was a lot of hype in India about the vaccine, but of lately they figured out that it did not really help. Like even after vaccine, they have seen there were a lot of side effects. So I No, mean, no, let me tell you, the yeah, vaccine has no side effect. It is because see हमारे यहाँ क्या होता है मेडिकल में, कुछ भी right. अगर रिपोर्ट होगा इन द वर्ल्ड, है ना, हाँ हाँ तो वो हाँ डेटा डेटा आ जाता है फॉरेन की इस हाँ वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट है. सो दिस वैक्सीन टिल नाउ हैज नो रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट कि आपको कोई भी इंजेक्शन लगाते हो तो आपको चक्कर आ सकता है. वो टेम्पररी होता है. आपको चक्कर आ गया, आपको सही बात पेन हो है गया, आपको स्वेलिंग आ गया, आपको उस जगह पे लाली आ गई, तो ये तो किसी भी वैक्सीन के बाद हो सकता है. सही लेकिन बात इस वैक्सीन की वजह से कोई और प्रॉब्लम आना आपके बॉडी में ऐसा रिपोर्टेड नहीं है अब तक. All right. So, ma'am, I just see these two questions on board. Thank you very much. It was a wonderful session. Thank you very much for the Thank you insights. so much for having me here. Thanks Thank for you your so much. time. Thanks for your Thank time, you. ma'am. Thank Thank you. you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. That's the